A detention camp that has now sparked massive outrage. 19 men from a village in Bengal's Birbhum district have been detained in Orissa and have been labelled as illegal Bangladeshis. They say that they have all the documents. They also say they were picked up because they speak Bengali. Now these arrests have snowballed into a big political face-off. Take a look at this report. Sukrabad, on the border of Birbhum and Murshidabad, a village built on migration, where most men travel hundreds of kilometers to find work. But now, the word migrant carries a dangerous tag. "38-year-old Saidur Rahman left home for work, like he has for years. Instead, he landed in a detention camp. Residential certificate. residential certificate blocked. He and 18 others, all from poor Muslim families, were picked up in Balasore. They were told, "You are Bangladeshis." সে বলে নাকি বাংলাদেশি আমাদের সকল ডকুমেন্টস আছে জমা দেখাচ্ছি প্রুফ দেখেছি তবু বিশ্বাস করছে না বলছে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে তারা ওখান থেকে বালেশ্বরে নিয়ে গেছিল বালেশ্বর থেকে চাঁদিপুরের থানার আন্ডারে একটা ডিটেনশন ক্যাম্প আছে ওখানে রেখেছিল ওখানে 17 জন ছিলাম 18 জনের মধ্যে একজনকে ছেড়ে দিয়েছিল Naseem Akhtar, 47-year-old, has sold scrap for over 3 decades. He had all valid papers, but none of that mattered. 25 তারিখ থেকে ডাকলো ফোন করে ডেকে থানাকে গেলাম থানাতে সে আধার কার্ড জমা নিল জমা নিয়ে করলো হাতে বলছে তোরা বাংলাদেশিয়া বলিয়ে তুলে থুই মোটামুটি রেখে ছেড়ে দিয়ে আবার সন্ধ্যা সকাল 7টার সময় গেলাম সকাল 7টার সময় সারাদিন মার রেখে যে না তোরা বাংলাদেশিয়া তোদের ই করাবে না নিয়ে সেই বালেশ্বর নিয়ে গেলো বালেশ্বরে রাখলে না নিয়ে গেলো চাঁদিপুর Abdul Hadi, a small trader, says he had Aadhaar, voter ID, even PAN. Still, he was picked up. His fault? He says it was his language. বাংলাদেশি কেন বলছিল আপনারা বাংলাদেশি তৎকালীন আমাদেরকে লাগে বাংলাদেশি বলছে বাংলাও কথা বলতাম সবাই তো উড়িয়া কথা জানে না It was Mohammad Mohsin Mondal, former Panchayat leader, who managed to help them return. Documents already have sent to the government and their original documents have been verified from the West Bengal government and they already sent to government of Odisha. They have been already verified and they have been proved that they are the citizens of Indian and village of Sukrabad. They are not infiltrator of Bangladesh. It has been injustice upon them. हम लोग बार बार बोल रहा हूँ अगर कोई बांग्लादेश से कोई आया है ठीक है तो वो बीएसएफ का मैटर है उसका लिए हम लोग का कोई मैटर नहीं है जो इंडियन आइन में जो है शास्ति दीजिए हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर जो पश्चिम बंगाल का जो बाशिंदा है जो इंडियन सिटीजनशिप है उन लोग को क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं लोग What has happened to these 19 men does not seem to be an isolated cause, with TMC MP Mahua Moitra also alleging that 9 people were picked up from her constituency, Krishnanagar. Chief Minister Mamta Banerjee has taken this to the streets, accusing the BJP of communal targeting. हर इंसान जो इंडिया का नागरिक है हम उसको सम्मान करते हैं लेकिन इसको मतलब नहीं होता है कि बंगाली का ऊपर आप अत्याचार करे ये हम नहीं छोड़ेंगे তাদের দিয়ে কাজ করাবে আর বাংলা ভাষায় কথা বললে তাকে জেলে নিয়ে চলে যাবে কোন অধিকারে ওয়েস্ট বেঙ্গল इज नॉट इन इंडिया जब महाराष्ट्र में हिंदी भाषी को निकाल दिया था तो हम लोगों ने पहले आवाज उठाया था इसको समझना पड़ेगा जैसे क्या हुआ गया বাঙালিদের উপর আপনাদের এত রাগ কেন কি করেছে বাঙালি
But BJP's Suvendu Adhikari has hit back, calling them infiltrators and accusing the TMC of shielding illegal migrants. Mamata Banerjee, due to her fear psychosis, she is on the road today. Because she knows it very well, after Bihar, if election commission will start random and thorough revision of the voter list, approx 1 crore Rohingya Musalman names will deleted from the voter list. Prime Minister Modi too has entered the war of words, lashing out at the Mamata Banerjee government for allowing illegal immigration to flourish in West Bengal. यहाँ टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है, घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। ये पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। For now, these families wait for answers and dignity. For them, this is not about politics. It's about identity and survival. The incident of Orissa echoes similar action in other states where Bengali migrant workers were picked up for having suspicion of being Bangladeshis. But now it's far from over. Having the incidents getting repeated in different states, it's now state versus the center. But the larger question remains that how soon the apathy of these migrant laborers will end. With video journalist Taposh Boiri, this is Taposh Sengupta for India Today in Birbhum.